ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। कल हम बात कर रहे थे आईपी एड्रेस से। मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था और उसमें बताया था दैट आईपी एड्रेस इज 32 बिट्स इन साइज। टू पार्ट्स आर देयर: network address, host address. Network address identifies the network, host address identifies the host, and combined together both of these values makes your IP address, which is going to be unique, of course. Now next thing we have to begin with is representation of IP addresses. Now three ways are there. IP address को हम तीन तरीकों से represent कर सकते हैं. One of the common ways, simple ways, we call it as dotted decimal notation. Dotted decimal notation. Now in dotted decimal, your IP address looks somewhat like this: A dot B dot C dot D. This is the format. That is, your IP address, in fact, it consists of 4 parts. Each part is separated by dot. Hence this word dotted. Each part consists of 8 bits. So this is known as octet. Each part is known as octet because it consists of 8 bits. And you can see we have got 4 octets this way. That is 8 into 4. That makes it 32-bit size address. Right. So dots are there, which are the separator. And this word dotted or decimal. Deci stands for 10. Meaning we are using 10 digits only to represent these octet values. और वो 10 डिजिट आपको बहुत अच्छे से मालूम है. Counting start from 0, 1, 2, 3 goes up to 9. ये है 10 डिजिट. So we people as human beings, we are very comfortable in dotted decimal. जब भी हम आईपी एड्रेस लिखते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, सब डेसिमल में ही करते हैं. So this is one way. Another way of representation, इसे हम बोलते हैं hexadecimal notation. Hexadecimal. Now hexadeci meaning 16. This time we are using 16 digits to represent the octet values, or rather the address values. और वो 16 digit क्या है? Once again, your counting starts from 0, then 1, 2, 3, goes up to 9, just like decimal. But after 9, it still continues as A, B, C, D, E, F. So 0 to F, ये हैं 16 digits. So यहाँ पे याद रखिए, जैसा मैंने शायद पहले भी बताया है, A, B, C, D यहाँ पर जो है ये कैरेक्टर्स या अल्फाबेट्स नहीं है, ये digits हैं, hexadecimal digits. And if you compare these digits with that of decimal, so A is equivalent to 10 of decimal, B is equivalent to 11, F is equivalent to 15 of decimal. So 0 to F, ये हैं 16 digits. Right. One example of hexadecimal uses. कल मैंने आपको बताया था मैक एड्रेसेस जो हैं वो सब हेक्साडेसिमल में ही होते हैं. राइट. उसी तरीके से जो नया वर्जन आया है आईपी एड्रेसिंग का, IPv6, वो भी सब हेक्साडेसिमल में है. वर्जन 4 एड्रेस को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है वो भी हम कर सकते हैं. राइट. इसका अच्छा यूज है. विंडोज में एक कॉन्सेप्ट होता है विंडोज रजिस्ट्रीज. राइट. These are small database files in Windows. So Windows सिस्टम में जब हम IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं तो करते तो हम सब डेसिमल में, but those values are all getting stored in the registries in hexadecimal format.
तो मैं केवल ये बताना चाहता हूँ कि वर्जन 4 एड्रेस को हम हेक्साडेसिमल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करते हैं, राइट, स्पेशली इन द स्ट्रीम्स, राइट। तो ये हो गया आपका दूसरा तरीका। एंड थर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, दिस इज बाइनरी। Binary notation. Bi stands for two, meaning this time we are using only two digits to represent your address values. दो digit क्या है? 0 and 1. In fact, 0 and 1 आपको पता है, these are all bit values, and bit is the ultimate data storage unit, right? And your system is very comfortable in binary. Whenever we talk about data storage, right, it is all getting stored in binary. System is going to process everything in binary. Even in network communication, जब data transfer होता है, it again goes all in binary. So your system is very comfortable in binary. उसको 1010 की भाषा बहुत अच्छे से समझ में आती है. So the bit value is 0, we say state of the bit is off. The value is 1, we say state of the bit is on. These are the two states of the bit. Yes. So these are three ways of representation of IP address version 4. Now the thing is that when we configure the IP address, we do everything in decimal, right? But system at the back end is going to process everything in binary, right? Decimal में कुछ भी नहीं. Not only this, whatever rules are there, whatever guidelines are there for version 4 addressing, वो भी सब binary में है, right? As such, decimal में कुछ भी नहीं है, except for that we people as human beings, we do everything in decimal, right? We feel somewhere that we are very comfortable in decimal, but your system at the back end does everything in binary. Now this is a gap. गैप क्या है कि अगर हमें कोई भी एड्रेस जो हमने सेटअप किया है, कॉन्फ़िगर किया है, अगर हमें समझना है कि इस एड्रेस को सिस्टम प्रोसेस कैसे करता है, व्हाट सिस्टम अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस गिवन डेसिमल वैल्यू, अगर ये हमें समझना है, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस वैल्यू इन डेसिमल, हाउ इट ऑल लुक्स लाइक इन बाइनरी, राइट, एंड वाइस वर्सा. If any address value in binary is there, so how it all looks like in decimal. Yes. ये हमें समझना है. क्यों? क्योंकि आईपी एड्रेसिंग के सारे रूल, सारी गाइडलाइंस वो बाइनरी में है, डेसिमल में कुछ भी नहीं है, राइट. इसे हम बोलते हैं कन्वर्जन, राइट, जो शायद आपने किया भी होगा. डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, ये कन्वर्जन हमें मालूम होना चाहिए, राइट, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वर्जन 4 एड्रेसिंग, राइट. हेक्साडेसिमल भी हम कर सकते हैं, बट राइट नाउ वी डोंट नीड इट. यस. तो आप लोग मुझे बताइए, ये कन्वर्जन आपको मालूम है? कोई भी वैल्यू डेसिमल में जो है, हाउ इट ऑल लुक्स लाइक इन बाइनरी, और हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी एंड वाइस वर्सा. कैन यू डू इट? Yes, sir. यस सर. सभी लोग कर लेंगे ना? अगर मैं कोई वैल्यू दूं तो कर पाओगे? चलिए, एक वैल्यू मैं आपको देता हूँ, 110101, 0101, ठीक है. कन्वर्टेड टू डेसिमल. टू वन थ्री. ऑलराइट, बाकी लोग कर लिए सबने? दिस 213, दैट्स करेक्ट. Yes, sir. 213. All right. Fine. I hope you understand all this. चलिए, so आगे बढ़ते हैं. I presume that you're comfortable with this conversion. चलिए, तो हम बात कर रहे हैं आईपी एड्रेसिंग वर्जन 4 के बारे में. And to understand this addressing, we are going to make
one table. हम एक टेबल बना के लेंगे. Under the headings, first is classes of IP addresses. Then purpose of each of this class. Then format. Then high order bits. Address range. Then number of network bits. And number of host bits. Available. Under these headings, we'll try to understand this version 4 addressing. Classes, purpose, format, high order bits, address range, number of network bits and number of host bits available. Now, the thing is that this entire range of version 4 addresses, this is classified into 5 classes. And those 5 classes are class A, class B, C, D and D. Right? पूरा जो रेंज है वर्जन 4 का 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें से प्रैक्टिकली स्पीकिंग ओवर द इंटरनेट एंड देयर इन द क्लाउड यू विल फाइंड एड्रेसेस आइदर ऑफ क्लास ए, बी और सी. इंटरनेट पर आपको ये 3 क्लास एड्रेस ही देखने को मिलेंगे. यानी हम बोल सकते हैं कि these 3 class addresses are being used commercially. Class D and class E, these are special purpose classes. We are not using them directly in communication. Direct communication process में हम use नहीं कर रहे इनको. For example, if I talk about class D, so entire range is reserved as multicast address range. Class D addresses are multicast addresses. और multicast addresses जो हैं ये special range है. Developers, programmers, they are using this range in their network applications, programs, protocols, right? Multicasting जो है एक identifies a group of devices. ये special case है. और वैसे भी क्लाउड में ये supported नहीं है, right? Multicast address. और क्लास E तो कभी पिक्चर में आया ही नहीं है, right? This range was initially, right from the inception, it was reserved for research and experimental purposes only. Research and experimental purposes. Yes. So अब हमारा जो फोकस रहेगा वो ये 3 क्लास एड्रेसेस पे ही रहेगा, A, B and C, right? Because this is what we are using everywhere, right? Now, before we begin with this, let me tell you a brief history about this. क्या है वो? ये जो क्लास कॉन्सेप्ट है, when we say that we have classified the addresses into different classes, so in fact it was all based on the need, the requirement of address values. जब वर्जन 4 एड्रेसिंग लॉन्च किया गया था, ये क्लास कॉन्सेप्ट केवल उसी वक्त के लिए ही सिग्निफिकेंट रहा है, उसका कुछ रेलेवेंस रहा है इनिशियली एट द टाइम ऑफ लॉन्च. और उन दिनों ये जो क्लास कॉन्सेप्ट था, it was all based on requirement. क्या मतलब हुआ इस बात का? So, for example, some organizations say that I need tremendous number of address values. मेरा नेटवर्क बहुत बड़ा है. So, according to the class rules, go for class A. It was like that. Somebody says that I need a network of very less number of address values. My network is small. So, according to class rules, go for class C. It was like that. Initially, at the time of launch, right? यानी जब एड्रेसिंग लॉन्च हुआ था तब ये क्लास कॉन्सेप्ट का कुछ रेलेवेंस था, कुछ सिग्निफिकेंस था, राइट? सो इनिशियली सब ठीक ठाक चल रहा था, राइट? उस वक्त नेटवर्क छोटे थे, सिंपल, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी, सो इट वाज ऑल वर्किंग फाइन. लेकिन जैसे जैसे नेटवर्क का साइज बढ़ता गया,
more and more users, more and more individuals, they were added up there on the network, which has taken the shape of internet now. आज का जो इंटरनेट है, it's very vast, very complex. We even don't know that how many user devices are there on this internet. तो जैसे जैसे नेटवर्क का साइज बढ़ा, more and more addresses were utilized. Then somewhere at a junction, we realized that this class concept, it does not hold any good. Rather, it's creating more of issues, more of problems. And so we abolish all these rules. Yes. तो देखिए मैं बताना ही चाहता हूँ यहाँ पर कि आज की डेट में इंटरनेट पर या कहीं पर भी जब हम वर्जन 4 एड्रेसेस यूज करते हैं तो हम बोलते तो जरूर है कि ये क्लास ए एड्रेस है, क्लास बी, क्लास सी, लेकिन अब उसका कोई रिलेवेंस या सिग्निफिकेंस रह नहीं गया है। अब ये केवल नाम के लिए है, राइट? यानी अब ऐसा हो सकता है that somewhere you may find somebody is using class A and network is very small. हो सकता है opposite, somewhere you may find class C addresses being used and networks are very big. बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब irrespective of the class कुछ भी क्यों ना हो, नेटवर्क साइज कुछ भी हो सकता है, दिस इज ऑल क्लासलेस एड्रेसिंग। यानी आज की डेट में जो एड्रेसिंग चल रहा है हमारा इंटरनेट पर या कहीं पर भी, वो सब क्लासलेस एड्रेसिंग है, मीनिंग we no longer follow any class rules now, right? This is classless. Why? Because we really don't need these class rules. बस बात इतनी है कि इनिशियली लॉन्चिंग के टाइम पे ये इंट्रोड्यूस हुआ था, तो आज भी हम बोल देते हैं क्लास ए, क्लास बी, लेकिन उसका कोई रिलेवेंस है नहीं, बिकॉज वी डोंट नीड इट। आज का इंटरनेट तो इतना कॉम्प्लेक्स है, और जो नया हमारा वर्जन आया है, वर्जन 6, IPv6, उसमें ये क्लास कॉन्सेप्ट है भी नहीं, राइट? तो यहाँ पर जब हम इसको, ये बात मैंने इसलिए बताई है बिकॉज हमारा सीखने का जो सीक्वेंस है, प्रोसेस है, वो कुछ इसी तरीके से रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्लास रूल्स क्या थे, राइट? Then what problems we started facing because of these class rules, and ultimately what is this classless addressing which is going on everywhere? यानी classless addressing को अगर समझना है तो थोड़ा सा ये भी आइडिया होना चाहिए कि भाई क्लासफुल एड्रेसिंग क्या था, right? That's the thing. So right now when I'm going to proceed with this table, we're going to see everything all according to class rules, all right? And then we'll see what problems were there, right? Gradually क्या problems जो हैं pop up हो गई, and finally classless addressing क्या है? That is the ultimate target because that is what is there running everywhere in the cloud also, right? तो चलिए शुरू करते हैं। So class A addresses purpose, जैसा मैंने बताया, they were supposed to be used by very large organizations, meaning big size networks. Class B, it was all meant for medium sized organizations. Medium sized networks, and class C, it was all for small size organizations, smaller networks, right? It was like that. Next is format. अब कल मैंने आपको बताया था कि वर्जन 4 एड्रेस साइज इज 32 बिट्स, 4 ऑक्टेट्स आर देयर, 2 types of bits are there, network bits, host bits. 2 major parts are there, network address, host address, isn't it? Bits fix नहीं, नेटवर्क बिट्स कुछ भी हो सकते हैं, होस्ट बिट्स कुछ भी हो सकते हैं, टोटल हमेशा 32 ही होगा, राइट? But right now we are looking at all according to class rules, right? So all class A addresses now, designer said that जितने भी class A addresses हैं उनका format होगा network, host, 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 right? यानी 4 ऑक्टेट है। Out of these 4 octets, the first octet is the network octet, defines network address, right? This for class A. The remaining 3 octets are going to be host octets and define host address, right? याद रखिए जो भी मैं लिख रहा हूँ ये सब क्लास रूल के मुताबिक है, फिक्स नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है, right? Similarly for class B, designer said that all class B addresses format will be network, network, host, host.
First two octets are the network octets, defines network address. Similarly, for class C, they define it as network host. First three octets are the network octets, define the network address. Class D and class C ऐसा कोई concept नहीं था, right? Okay. Next, high order bits. Yes, क्या मतलब हुआ? देखिए, जब हम बोलते हैं कि हमने एड्रेसेस को क्लासिफाई किया है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, so there must be some rule, some criteria, right? That is when system is going to process any address value, उसे कैसे समझेगा कि क्लास ए का एड्रेस है या क्लास बी का एड्रेस है? So rules were defined, of course. लेकिन जितने भी रूल्स हैं, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, all rules were in binary. डेसिमल में कुछ भी नहीं है, right? So for example, if I talk about class A, designer said that all class A address values, high order bit is going to be 0. Binary 0. 0 means binary, not decimal. क्या मतलब है इस बात का? Let us see on a separate page. तो हम क्लास A के बारे में बात कर रहे हैं, right? Once again, if you have a look at the format for this class A, class A format, network, host, right? Designer said that all class A addresses, high order bit is going to be 0, meaning if suppose you expand this first octet in binary, right? Rules are all there in the first octet. इस पहले octet को अगर हम binary में देखते हैं, so 8 bit है, right? और 8 bit में bits which are there on the right side, आप जानते हैं calculation, they have a lower weightage. 1, 2, 4, 8, 16, 32, like this. So in this sequence, the bit which is there on the leftmost side, leftmost bit, which is having the weightage of 128. This is the highest order bit, right? Out of 8 bits in this octet, the bit which is there on the leftmost side, this is the highest order bit. Designer said that this bit is always going to be 0. This is rule. Rule इतना ही है, यानी मतलब क्या हुआ? That when system is going to process any IP address value, anyway, processing it does all in binary. And if suppose system finds that in this IP address, the very first octet, the very first bit into that is 0, meaning this is class A address value. Is this clear? This rule. Users cannot change this bit now. This is fixed. Reserve. यानी 8 बिट में से एक बिट तो हो गया आपका रिजर्व, तो बाकी बचे 7 बिट, isn't it? बाकी बचे 7 बिट का मतलब only 7 bits are there which are available to you. Available means if at all you want to change the bit values 1 या 0 कुछ भी अगर आप करते हैं तो ये बाकी बचे 7 बिट में ही आप कर सकते हैं. ये जो पहला बिट है हाईएस्ट ऑर्डर, दिस इज फिक्स्ड एज 0, क्लास ए की पहचान है, दिस इज रूल, राइट? तो रूल इतना ही सिंपल है, राइट? ऑल क्लास ए एड्रेसेस in the first octet, the very first bit, highest order, is 0, right? Okay, this rule is binary, और हमें सब आदत है करने की डेसिमल में. So now we have to see that with this rule in place, what is going to be the range for this octet? यानी इस octet का minimum value क्या होगा और maximum value क्या होगा when you have got only 7 bits in hand, right? First bit is simply not available to you. It's a reserved, fixed, 0. Or if I is the class,
तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा? दैट व्हाटएवर 7 बिट्स यू हैव, make them all 0. It cannot be lower than this. All 7 bits 0. This is the lowest value. And with this, your octet becomes it 0, 0, 0, 0, 0. Conversion in decimal comes to 0. Right? और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है इस ऑक्टेट का? वी आर लुकिंग एट द रेंज, राइट, विद दिस रूल इन प्लेस. तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? दैट व्हाटएवर 7 बिट्स you have, make them all 1. All 7 bits 1. It cannot be higher than this, right? भाई पहला बिट तो 0 ही रहेगा, उसे हम चेंज नहीं कर सकते. So with this, your octet becomes there 0, 1, 1, 1, 1, 1. Conversion. Every time we have to see how it all looks like in decimal. तो कन्वर्जन क्या होगा? अगर 8 बिट 1 होते हैं, all 8 bits 1, तो वैल्यू होता है 255. Remember, this is the maximum value for an octet as such, right? एक ऑक्टेट में 8 बिट है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 8 बिट को 1 कर दो. Conversion comes to 255. So if all 8 bits are 1, so value is 255. Because this bit is 0 here, which is having the weightage of 128. So minus 128. ऐसा भी कर सकते हैं, right? And this calculation comes to 127. This is going to be the maximum value for this octet now with this rule in place, right? जैसे हमने रूल लगाया तो रेंज आधा रह गया. Otherwise, for this entire octet, 8 bits, right? Minimum value is going to be 0 and maximum is the 255. This is the range for 8 bits, right? लेकिन जैसे ही हमने ये रूल लगाया that first bit is fixed 0, range आधा रह गया 0 to 127, right? This is the range 0, 1, 2, 3, 4 up to 127. और ये जो भी वैल्यूज आई हैं ये पहले ऑक्टेट के लिए हैं, which defines network address. यानी ये जो वैल्यू रेंजेस हैं ये सब नेटवर्क एड्रेस वैल्यूज हैं. लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ रिजर्वेशंस भी हैं, राइट? क्या है वो? दिस वैल्यू 0, दिस इज रिजर्व्ड फॉर स्पेशल पर्पसेस, स्पेशल केसेस. मीनिंग practically you will never find any IP address beginning with 0. यानी 0 डॉट समथिंग समथिंग समथिंग, ऐसा कभी भी आपको कोई एड्रेस देखने को नहीं मिलेगा, राइट? Entire range of zeros is reserved for special cases and purposes. So it is taken away from class A, right? Similarly, 127 address range ये भी reserve कर दी गई है, right? This is all reserved for loopback addresses. यानी any address beginning with 127, यानी 127 dot anything, anything. This is loopback address, right? तो ये दोनों ही address ranges reserved हैं. We cannot have them assigned as an IP address. ये आपको मैं जरा show भी कर देता हूँ so that you shouldn't be forgetting it, right? ये मेरा एक Ethernet card है. Go to TCP/IP properties and let's see if I try assigning any address value beginning with 0. Here I type 0 dot. ये देखिए लेता ही नहीं. It says 0 is not a valid entry, right? So any address beginning with 0, this is invalid, right? System generates error for it. So this entire range of 0 is taken away, right? Similarly, any address beginning with 127, ये भी रिजर्व है, ये भी हम कहीं असाइन नहीं कर सकते, आपको प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिलेगा कहीं पर भी. Let us see once again. If I try typing out 127, ये देखिए IP addresses starting with 127 are not valid because they are reserved for loopback addresses. ये दोनों ही एड्रेस रेंजेस रिजर्व हैं. इनफैक्ट ये दोनों ही एड्रेस रेंजेस किसी भी क्लास को बिलोंग नहीं करती हैं. They are taken away from class A, and these two ranges do not belong to any class also.
So effectively, my counting starts from 1, goes up to 126, right? 0 हटा दिया और 127 हटा दिया, और याद रखिए जो भी रेंजेस हम लिख रहे हैं पहले ऑक्टेट के लिए है, which defines network address, right? So कहने का मतलब क्या हुआ? This is the range of first octet, meaning any IP address whose first octet value ranges 1 to 126, meaning class A IP address. Example, if I write some address value like 100.200.1.1, ये class A IP address है. क्यों? Because this value 100, it is all from this range. तो याद रखिए किसी भी एड्रेस वैल्यू का अगर क्लास जानना है तो हमें हमेशा पहला ऑक्टेट वैल्यू रेंज ही देखना है. You find that first octet value is ranging 1 to 126, any value class A. Remaining 3 octets कुछ भी हो सकते हैं. Alright, क्लास जानने के लिए हमें हमेशा पहला ऑक्टेट वैल्यू रेंज ही देखना है. That's how we speak in decimal, right? इसी बात को बाइनरी में कैसा बोलेंगे? Binary. If suppose in the first octet, the very first bit, highest order, the highest order bit, 128. If this is 0, class A. दोनों बातों का एक ही मतलब है, सिर्फ बोलने का अंदाज अलग है, right? This is the binary way of speaking and this is the decimal way of speaking. या अगर कोई बोलता है कि भाई ये रेंज 126 तक ही क्यों रखा, why not any the number 140, 150? तो रीजन है, उसका लॉजिक है, कैलकुलेशन है, ऐसा कोई मनमर्जी से उठा के नहीं रख दिया. Just because we are fixing up this bit as 0, that's why you're getting the range 1 to 126. 0 and 127 are exceptions, right? They are reserved, they are taken away. So this is what we're going to update over here in the table. Address range for class A starts with 1, goes up to 126. Remember, first octet only. जो भी रेंज हम बात कर रहे हैं वो पहले ऑक्टेट के लिए है. बताइए, is this clear? Everything has got a reason, the rule, and rules are all in binary. Yes. Clear यहाँ तक सभी को? Yes, sir. Right. रूल्स सब बाइनरी में, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ. रूल्स डेसिमल में नहीं है. हर बार हम देखते हैं कि बाइनरी में रूल कैसा दिखता है और उसका कन्वर्जन डेसिमल में कैसा नजर आता है. चलिए, next we have to understand number of network bits and number of host bits. Right. आपको पता है टोटल बिट्स आईपी एड्रेस में कितने हैं? 32. ये टोटल बिट्स, जिसमें से कुछ नेटवर्क बिट्स हैं, कुछ होस्ट बिट्स हैं. नंबर फिक्स नहीं है, लेकिन अब जो भी बातें हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो है अकॉर्डिंग टू क्लास रूल्स. क्लास रूल के मुताबिक हमें समझ रहे हैं कि कितने नेटवर्क बिट्स हैं आउट ऑफ 32, कितने होस्ट बिट्स हैं आउट ऑफ 32, राइट? तो क्लास रूल के मुताबिक हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि जो पहला ऑक्टेट है आपका वो नेटवर्क ऑक्टेट है. ऑक्टेट मीन 8, मीनिंग देयर आर 8 नेटवर्क बिट्स टोटल अकॉर्डिंग टू क्लास रूल्स. ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ. तो 8 तो टोटल है. अवेलेबल कितने यूजर्स को, या उल्टा भी बोल सकते हैं कितने बिट्स अवेलेबल नहीं है, राइट? एक ही बात है, कितने बिट्स अवेलेबल हैं या कितने बिट्स अवेलेबल नहीं है. क्या लगता है? सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है अभी. यस Sir, 7 available. गुड. 7 बिट ही अवेलेबल हैं, बिल्कुल ठीक है. ये है वो 7 बिट जिनकी हम बात कर रहे हैं, राइट? टोटल है 8 बिट, लेकिन 8 में से ये बिट अवेलेबल नहीं है ये नेटवर्क बिट. 0 जो है यहाँ पर है ये नेटवर्क बिट, लेकिन अवेलेबल नहीं है यूजर्स को. मतलब यूजर्स कैनॉट चेंज दिस बिट, इट्स ऑलवेज गोइंग टू रिमेन 0 फिक्स. क्लास ए की पहचान है ये. बाकी बचे जो 7 बिट है वो अवेलेबल है, जिनका वैल्यू आप मैनिपुलेट कर सकते हो, 0 या 1 कुछ भी कर सकते हो. तो ये बात हमें 2 तरीके से याद रखना है. टोटल नेटवर्क बिट्स हैं 8, लेकिन 8 में से अवेलेबल हैं 7. और होस्ट बिट्स हमें दिखाई दे रहा है
3 ऑक्टेट होस्ट के हैं HHH, मीनिंग 8 + 8 + 8, 24, sir. right? Are there available? Yes. यहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं, जरा होल्ड करना एक सेकंड. यस, सो ये बात जरा हम अपडेट कर देते हैं. राइट, यहाँ पर क्लास ए में टोटल नेटवर्क बिट्स हैं 8, अवेलेबल हैं 7, and host bits are 24. All are available. बोलिए, is this clear? This is the equation about class A. तो आप देखेंगे यहाँ पर जो भी रूल्स हैं सब बाइनरी में है, डेसिमल में कोई रूल नहीं है. राइट, हर बार हम देखेंगे कि बाइनरी में वैल्यू कैसी है और उसका कन्वर्जन डेसिमल में कैसा दिखता है. यस, क्लियर, आगे बढ़े. Yes, sir. राइट, चलिए, कमिंग टू क्लास बी. फॉर क्लास बी, डिजाइनर सेड दैट हाई ऑर्डर बिट्स आर गोइंग टू बी 1 0. This rule and rules are all here in the first octet. So once again, let's have it there on the separate page. Once again, if I expand this first octet in binary, class B की बात चल रही है, right? Format is network, network, host, host. Yes. So if we expand this first octet in binary, so ये है आपका पहला octet, right? इस पहले ऑक्टेट में पहले 2 बिट हाईएस्ट ऑर्डर, one having the weightage of 128 and next to it 64. These are reserved as 1 0. This is rule for class B. यानी जब सिस्टम प्रोसेस कर रहा है किसी एड्रेस वैल्यू को, तो प्रोसेसिंग बाइनरी में सब, अगर सिस्टम ने पाया कि इस पहले ऑक्टेट में पहला बिट 0 है, मतलब क्लास ए. अगर उसने पाया कि इस पहले ऑक्टेट में पहले 2 बिट है 1 0, मतलब ये क्लास बी है. यूजर्स कैनॉट चेंज दीज 2 बिट्स. दीज आर रिजर्व, फिक्स्ड. क्लास बी की पहचान है. यानी 8 में से 2 बिट हो गए रिजर्व, तो बाकी बचे आपके 6 बिट. यानी only 6 bits are there available to the users in this first octet now, जिसका वैल्यू वो चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं. तो बात फिर से वही, इस रूल के रहते हैं हमें देखना है व्हाट इज गोइंग टू बी द रेंज फॉर दिस ऑक्टेट. मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा व्हेन यू हैव ओनली 6 बिट्स इन हैंड. यस, सो मिनिमम क्या होगा, दैट व्हाटएवर 6 बिट्स यू हैव, मेक देम ऑल 0. All 6 bits 0. It cannot be lower than this. So octet क्या हो गया आपका 1 0 0 0 0 0. Conversion 128 straight away. और मैक्सिमम क्या हो जाएगा, at whatever 6 bits you have, make them all 1. पहले 2 बिट तो फिक्स है 1 0, उसे तो हम चेंज कर नहीं सकते हैं. So with this your octet becomes there 1 0 1 1 1 1 1. Conversion, अगर 8 बिट 1 होते हैं तो वैल्यू होता है आपका 255. क्योंकि ये बिट है 0, सो -64 ऐसा भी कर सकते हैं. एंड सो दिस कैलकुलेशन कम्स टू 191. एंड सो दिस इज गोइंग टू बी द रेंज फॉर क्लास बी. रिमेंबर, ये जो भी हम वैल्यू रेंजेस बात कर रहे हैं वो पहले ऑक्टेट के लिए हैं, क्योंकि रूल सारे पहले ऑक्टेट में ही हैं. राइट, यस. तो कहने का मतलब क्या हुआ, any IP address
whose first octet value ranges 128 to 191, meaning class B address. Example, अगर हम लिखते हैं मान लीजिए 150.100.0.20, ये क्लास बी एड्रेस है. क्यों? Because this value 150 is all from this range. So बात वही, you need to identify the class for any given address. आपको हमेशा पहला ऑक्टेट वैल्यू रेंज ही देखना है. If you find that the first octet value is ranging 128 to 191, both values inclusive, class B. Remaining 3 octets कुछ भी हो सकते हैं. Some decimal बोलेंगे. Binary में, it is suppose in the first octet, first 2 bits, highest order are 10, class B. Right? So this is what we are going to update over here now. For class B, range starts with 128, goes up to 191, first octet, right? Next, number of network bits and host bits. According to class rules, total bits हैं आपके 32, right? जिसमें से कुछ network bits होते हैं, कुछ host bits होते हैं, नंबर फिक्स है नहीं. हाँ, तो अभी जो हम बात कर रहे हैं क्लास रूल के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द क्लास रूल्स कितने नेटवर्क बिट्स होंगे इन क्लास बी नेटवर्क? क्लास बी So 16. 16. Very good. We have got 2 octets. Available will be 14. Very good. So 16 are the total network bits. जिसमें से 2 bit available नहीं है. -2, 14. Right? And host bits are ये 2 octet हैं. 8 plus 8, 16. Right. So this is what we will update. Total network bits are 16, available are 14, and host bits are 16. All are available, right? Okay, I hope you can do it now. Similarly for class C, चलिए class C के लिए आप भी करिए अब. High order bits are 110, right? First octet. चलिए करके लीजिए. Calculate the range and bits, total and available. Okay. बोलिए. Nobody? अनम्यूट करो, अनम्यूट अपने आप को, जल्दी बोलो. Sir, is it 161 to 223? नो 161 नहीं, कहीं कैलकुलेट मिस्टेक हो रहा है. पहला ऑक्टेट है आपका, इसमें पहले 3 बिट है 110,
बाकी लोग भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलते जाओ जरा। Yes, sir. पहले 3 बिट जो हैं दे आर 110 रूल। 3 बिट रिजर्व हो गए तो बाकी बचे 5 बिट। 8 में से 3 बिट रिजर्व हो गए। सो मिनिमम वैल्यू क्या होगा? तो मेक ऑल 5 बिट 0। कन्वर्जन 110 0 0 0। यस, कितना होता है? 192 स्ट्रेट अवे। 128 प्लस 64। क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप लोग बोल ही रहे हो। कौन नहीं बोल रहा है? कीर्ति, Yes, sir. आ रहा वेर है. इज द प्रॉब्लम? और कौन नहीं बोला? वरुण। Yes, sir. वरुण आप बात करो। हर्ष, Yes, sir. क्या हुआ? आप अनम्यूट क्यों नहीं करते हो? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आप जब तक बोलोगे नहीं मुझे समझेगा नहीं। पार्टिसिपेट Sir. मोर। समझ क्या ये समझ में आया? 192। Yes, sir. हर्ष, आपसे बात कर रहा हूँ मैं। Yes, sir. और मैक्सिमम क्या निकलेगा? कैलकुलेट किया आपने? No, sir. नो सर, यस सर, और कुछ बोलते ही नहीं हो आप। वेयर इज द प्रॉब्लम? कन्वर्जन का प्रॉब्लम है क्या? हाँ sir. हाँ, तो पहले क्यों नहीं बोला? मैंने पूछा कन्वर्जन आता है, आपने बोला आता है। कीर्ति, कन्वर्जन ठीक है आपका? हर ऐसे काम नहीं चलेगा, यू टू स्पीक। Okay, sir. हाँ, ये क्या कर रहे हो आप? बोलने 4th ईयर में आ रहे हो, यू शुड बी टॉकेटिव, यू शुड बी स्पीकिंग। ये पर्सनली लेके इंटरव्यू दोगे क्या आप लोग? इंटरव्यू इतना पूछने वाला क्या आपसे 4 4 बार? यू बी स्पीकिंग, ज्यादा ज्यादा बोलने का वो रखो ना। ये सारा प्रिपरेशन मैं इंटरव्यू के हिसाब से करा रहा हूँ, जॉब के हिसाब से करा रहा हूँ। आगे वो प्रोजेक्ट्स करने हैं हमको। Yes, sir. विद दिस पर्सनैलिटी व्हाट यू गोइंग टू डू? मैं कितनी देर से पूछ रहा हूँ, आया आता है नहीं आता है, कितना हो गया? यू शुड बी स्पीकिंग ना। Yes, sir. म्यूट करके बैठे रहते हो। कीर्ति, Yes, sir. व्हाट इज द स्टेटस? मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इसका? Yes, sir. व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? So max will be, I think, 223. राइट। So it will range from 95 to 191. 192 सामने लिखा हुआ है। रेंज इज तो 192 मिनिमम। मिनिमम कैसा है? अभी भी सामने बाइनरी में 110 0 0 0। 1 का Yes. मतलब 128 प्लस 64, दैट इज 192। और मैक्सिमम हो जाएगा इफ यू मेक ऑल 5 बिट्स 1, Yes. दैट इज द मैक्सिमम। और इसका कन्वर्जन आता है 223। कीर्ति, कन्वर्जन मालूम है ना आपको? Yes, sir. Conversion आता है. तो क्यों नहीं हो रहा है? आंसर क्यों नहीं आ रहा आपकी तरफ से? उस वक्त सबने बोल दिया कि मुझे आता है कन्वर्जन। ये हर जो है ये चुपचाप बैठे हुए। So this is the range for class C. Minimum starts with 192, maximum goes up to 223। और याद रखिए जो भी रेंज है ये पहले ऑक्टेट के लिए है, राइट? यानी अगर हम कोई क्लास सी एड्रेस का एग्जांपल लिखें तो कैसा नजर आएगा? सपोज आई राइट 200.0.55.165, ये क्लास सी का एड्रेस है। Simply because this value 200 is all from this range। तो बात वही है, मैं ये तीसरी बात को रिपीट कर रहा हूँ। क्लास जानने के लिए पहला ऑक्टेट वैल्यू रेंज ही देखना है। रिमेनिंग 3 ऑक्टेट्स कुछ भी हो सकते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो रूल्स हैं वो आपके पहले ऑक्टेट में है। 110 ये पहले ऑक्टेट में है। तो एज a result range is like this। So this is the range for class C।
नेक्स्ट हमें समझना है नेटवर्क बिट्स कितने हैं, होस्ट बिट्स कितने हैं, टोटल एंड अवेलेबल अकॉर्डिंग टू क्लास रूल्स। टोटल बिट्स तो वैसे 32 होते हैं किसी भी एड्रेस वैल्यू में, ठीक है। 32 में से कितने नेटवर्क बिट्स हैं टोटल? हर्ष आप बोलिए। Sir, 29. Yes, sir. How many network bits are there total? 4. This is the column. Network bits n. ये है network Sir, bits. 3. Yes, sir. ये octets हैं. 8 plus 8 plus 8. Octet means 8. 8 बिट होते हैं, एक ऑक्टेट में 8 बिट होते हैं। So 8 plus 8 plus 8 ये हो गए 24 नेटवर्क बिट, 24। तो दो तरीके से बोल सकते हैं इस बात को, 3 नेटवर्क ऑक्टेट हैं या 24 नेटवर्क बिट्स हैं। ये है ऑक्टेट, ये जो सामने ड्रॉ किया है ये ऑक्टेट, और इसमें ये जो वैल्यूज है ये है बिट्स, ठीक है। ये मालूम है ना, 1 या 0, 8 बिट होते हैं एक ऑक्टेट पे। तो अगर बिट्स की भाषा में बात करें तो 24 नेटवर्क बिट हैं टोटल, जिसमें से 3 बिट अवेलेबल नहीं है। ये 3 अवेलेबल नहीं है ये नेटवर्क बिट, लेकिन अवेलेबल नहीं है, यूजर इनको चेंज नहीं कर सकते। तो 24 माइनस 3 21 ही अवेलेबल है। 5 पहले ऑक्टेट में, 8 दूसरे ऑक्टेट में, एंड रिमेनिंग 8 तीसरे ऑक्टेट में। 5 plus 8 plus 8 21। और अगर होस्ट बिट्स की बात की जाए तो एक ही ऑक्टेट होस्ट का है यहाँ पर, मीनिंग 8। देयर आर 8 होस्ट बिट्स स्ट्रेट अवे, कोई रिजर्वेशन नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सारे रूल्स पहले ऑक्टेट में होते हैं। बस ये बात अपडेट कर देते हैं यहाँ पर। टोटल नेटवर्क बिट्स आर 24, अवेलेबल आर 21 एंड होस्ट बिट्स आर 8, ठीक है। Yes, sir. सिमिलरली फॉर क्लास डी, हर्ष समझ में आ गया आपको? Yes, sir. ओके, मैं अभी सब असाइनमेंट देने वाला हूँ, याद रखिए। कल क्लास में असाइनमेंट देंगे तो मुझे पता चलेगा कितना आपने सीखा है। क्लास डी का जो हाई ऑर्डर बिट रिजर्व किया गया है वो है 1110, राइट। सो एज ए रिजल्ट minimum value will be 224, maximum value will be 239, right। यहाँ पर कोई नेटवर्क या होस्ट बिट्स नहीं है। सिमिलरली क्लास ए, इसलिए रूल है 1111, पहले 4 बिट 1 यानी क्लास ई एड्रेस है। एज ए रिजल्ट द रेंज बिगिंस विद 240 गोज अप टू, वैसे तो ज्यादा 255 तक, लेकिन इसको 254 ही रखा गया है। कोई नेटवर्क बिट नहीं, कोई होस्ट बिट नहीं यहाँ पर। तो 3 वैल्यूज ऐसी हैं जो किसी भी क्लास को बिलोंग नहीं करती हैं। सबसे पहला वैल्यू है 0, देन 127 एंड फाइनली 255। ये 3 एड्रेस वैल्यू ऐसी हैं जो किसी भी क्लास को बिलोंग नहीं करती हैं, ठीक है। और हमारा जो फोकस रहेगा वो ये 3 क्लास एड्रेसेस पे ही रहने वाला है अब आगे के लिए। डी और ई पता होना चाहिए, राइट। अब हम 3 क्लासेस पे ही बात करेंगे, ए बी एंड सी। दिस इज व्हाट वी आर यूजिंग एवरीवेयर, इंटरनेट और क्लाउड। बोलिए, तो ये टेबल फाउंडेशन है, बेस है, राइट, हर चीज का। आगे हम जो भी बात करेंगे उस टेबल के आधार पे ही हम बात करेंगे। बताइए क्या क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चन? No, sir. ठीक है, रिवाइज करो उसको, राइट। कल Yes, मिलते हैं sir. सेम टाइम, आगे बात करेंगे, ऑलराइट। चलिए।